मैंने जब शुरू किया था तो मैंने नहीं सोचा था दैट यहाँ तक पहुँचेंगे, मुंबई में इतने साल रहेंगे। आई जस्ट स्टार्टेड विदाउट थिंकिंग एनी, इनडायरेक्टली घुमा के बातें करना शुरू किया। या Oh my God. कि पैसों का भी एंड हाँ, आई मीन कास्टिंग काउच नहीं, बट हाँ पैसों का, और फिर किसी को बताना नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। एंड शायद मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, इसीलिए उसने थोड़ी सी तमीज़ में बात की। अगर मैं अकेले गई होती तो वो कुछ और भी कर सकता था। आई डोंट नो, नेपोटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट वो हर इंडस्ट्री में चलता है। जस्ट दैट लाइक आवर इंडस्ट्री इज आउट देयर, पीपल जस्ट टॉक अ लॉट मोर अबाउट इट, बट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आई डू फील बैड एंड आई फील कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों को आसानी से मिल जाती है, उतनी शायद हमें नहीं मिल पाती है। खराब दिन है कोई तो आपको लगेगा यार बहुत गलत कर रही हूँ, काम ही नहीं मिल रहा है, या मुझे जो चाहिए वैसा काम नहीं मिल रहा है, या मुझे ऑडिशन के लिए ज़्यादा लोग नहीं बुला रहे। माय मॉम वुड आस्क मी कि यार क्यों इतना बड़ा ब्रेक ले रही है, क्यों नहीं कर रही है ये। अगर कोई शो आता था और मैं बोलती थी कि हाँ इस शो के लिए मुझे अप्रोच हुआ था, तो कहती क्यों नहीं किया, कितना अच्छा शो। People have problems. Yeah, they have. When you have your own opinions, when you have your stand, and when you question their logics. True. क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है, but उन्हें वो मानना नहीं है। हाँ. It's heartbreaking, especially for all the girls जिनको इन चीज़ों से exposure नहीं है। Small town girls who are just there and who admire, celebrities. तो beauty standards तो I think it's a wave. Some people are like, "Hurry, you're a girl, you don't have to pay." And that's how the term gold digger also comes in. That Yes. she's a gold digger. Yes. What, you paid for one drink and pizza? Where's the gold? She's self-made, she's smart, she's strong, she's extremely passionate, but above all, she is the sweetest of them all, and that's what makes her a true Shiro. Welcoming Helly Shah on a fresh new episode of Shiros, only on FPJ Showbiz. Hi Helly, how have you been? Hi, I'm good. How are you? I've been good as well. Firstly, thank you so much for being such a strong, inspirational woman. I know you don't think about it all the time, but because I have seen a couple of your interactions and I know you are like a very, calm, normal, introverted person. Yeah. But I'm sure women out there, they DM you, they message you, they sometimes comment saying that, maybe in some way you inspired them. Yeah. How does that truly feel? It honestly feels nice because I feel अगर मैं किसी एक को भी inspire कर पा रही हूँ in some way or the other, I think I mean मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, because I truly believe that no matter how much I work and how passionate I am, but eventually I do want to make a difference in people's lives positively. Entertainment and everything is nice and it's important, but apart from that, what is more important is bringing that value in people's lives. जो भी कैसे भी आप लेकर आ सकते हो. So when somebody messages me that आपने मुझे inspire किया just to pursue something or something that I really wanted to, or maybe your interview really, or your performance really touched me, or anything of that sort, it really, I mean, is special to me. मुझे अच्छा लगता है and I'm like चलो ठीक है, कुछ सही कर रहे हैं. A girl from Ahmedabad coming to Bombay, making all her dreams come true. Somewhere I saw that this wasn't even your dream as such. You wanted to be a doctor. When all of this was happening, did you ever feel that you will reach where you are? Because today you're one of the most loved young actors that I see, and medium no bar. I will not say only in television or only in OTT. Now you're doing films. So that transition has also been smooth, which is not that easy. I'll be honest, मैंने जब शुरू किया था तो मैंने नहीं सोचा था that यहाँ तक पहुँचेंगे, मुंबई में इतने साल रहेंगे. I just started without thinking anything. I was like, okay, let's give it a try, and God's been really kind, and I've been very fortunate enough to meet really nice people, work with great team and great makers. So I'm really thankful, and I've been somebody who doesn't plan things as such. Like if you today ask me कि आपका 5 साल का plan क्या है, I don't have a plan.
might have like you know few things here and there in my mind कि अच्छा ठीक है ये कुछ करना है या यहाँ घूमना है and all of that, but I wouldn't have like a proper laid plan. And I do see a lot of people of my age, they do have you know things planned out. मुझसे छोटे लोगों के छोटे लोगों का मैंने देखा है कि यार मुझे ये करना है, इस उम्र में शादी करनी है, ये करना है, all of that. So I've been somebody who likes to go with the flow, and कई बार वो आपको बैकफायर भी करता है, बट दैट इज़ ओके. आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ शुड बी. देयर हैज़ टू बी अप्स एंड डाउन्स, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू नो लाइफ ब्यूटीफुल. तो I mean, I'm grateful, and coming to the transition part, it has been a very conscious effort, and I won't say it has been very very easy. Of course. Because हर चीज़ की एक struggle आती है, and हर चीज़ में आपको you know मतलब सबके स्ट्रगल का डेफिनेशन अलग होता है और डिग्रीज अलग होती है, विच इज़ फेयर. बट like I said, I always enjoy all of this. There's this uncertainty, especially in our job. मुझे लगता है कि वही हमारी जॉब को बहुत खूबसूरत बनाती है. There shouldn't be that अच्छा ठीक है चलो ये काम हो गया, अब ये काम आएगा, ये काम आएगा. नहीं. It's this beauty about, I don't know, I mean, I enjoy it, and over the period of time, I've realized that how important it is to have certain breaks, to take time off and not just continuously keep on working. True, no, that is true, because work-life balance is so important. It's very important. You understand it a little late. I am so happy our generation is understanding it in their 20s. हमारे पेरेंट्स के जनरेशन 40s में आते थे, एंड देन दे यूज्ड टू थिंक यार हमने तो टाइम ही नहीं स्पेंड किया. बहुत मुश्किल भी होता है और लेट भी हो जाता है. दैट इज ट्रू. बट यू नो यू स्टार्टेड वेरी young when all your friends, peers, they were studying. Was it daunting? Because I saw a reel where you were saying that you ended up crying also on set of Gulal, and आपको नहीं तब समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, because obviously you are 14-15, what else to expect from a kid. कि तभी इमोशनली कैसा लग रहा था? उतना तो मुझे याद भी नहीं है अभी, बट obviously I used to not be extremely happy because मुझे डांट भी पड़ती थी, but I'm grateful. Like आज अगर मैं उस बारे में बात कर रही हूँ, but I'm really grateful कि वो डांट पड़ी और वो सारी चीज़ें मुझे सिखाई गई. That is the reason I am you know here today. But उस टाइम पे नहीं समझ आता था, and especially when you have such legendary actors who are experienced, and तो थोड़ा सा इंटिमिडेशन तो होता ही है, और आपको लगता है कि यार मैं बहुत गंदा कर रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, यहाँ पे तो सबको सब कुछ ही आता है. सो वो एक हमेशा ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कहाँ फंस गई and all of that. But eventually when I went back to Ahmedabad, that's when I realized that I had started enjoying this process and being in front of the camera, learning new things, meeting people. And then I thought कि अब 10th खत्म होता है and let's try again. Lovely. Yeah. But how supportive or not supportive your parents were? Because किसी भी पेरेंट्स के लिए ये सुनना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे होता है ना, नोशंस होते हैं कि अकेले लड़की को नहीं जा सकते, इट्स नॉट सेफ एंड ऑल ऑफ दैट. आई फील अच्छे और बुरे लोग हर ही इंडस्ट्री में होते हैं, बट बिकॉज ये एक थोड़ी जैजी इंडस्ट्री है, ग्लैमरस है, तो इसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं खुल के. एंड ऑफ कोर्स द कास्टिंग काउच एंड ऑल द स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड, हाउ वर देयर रिएक्शन? बिकॉज यू नो यू वर like 14-15, तो बहुत उनके लिए टफ होगा. I'm sure, and उस टाइम पे तो नहीं समझ आता था, but I have to admit that my parents have been extremely supportive till date. Nice. हर एक चीज़ में, and I agree कि उस टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा just to you know let their daughter move to a different city. Stay by her own, and obviously they used to visit me Saturday, Sunday, but मेरा भाई भी छोटा था, so they had to stay there only. तो Saturday, Sunday visit करते थे मुझे, and I used to update everything on call, like every day 1-1 घंटा 2-2 घंटे कॉल चलते थे कि सब कुछ ही बता देती थी मैं कि ये हुआ, इतना खर्चा हुआ, यहाँ मैंने पैसे खर्च किए. But I'm sure it was very very difficult for them, but hats off to my parents who actually showed that confidence in me and who actually supported me, because उस support के बिना नहीं हो पाता कुछ भी. Had they been a little reserved and you know कि यार नहीं रहने देते, because it's a very different industry, and coming from Ahmedabad, people don't know, and
not that I had like you know background, family background True, कि that कोई is- मेरे घर का है इस इंडस्ट्री हाँ. में, so nobody knew and इतना कुछ सुना होता है लोगों को, obviously आपके रिलेटिव भी इतना कुछ बोलते हैं कि यार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपको पता भी है कि नहीं, but I'm really grateful that they could actually do that Yeah. and support me. Were you, when you initially came, were you in any way fooled in terms of मैंने सुना है लोगों से पैसे मांगते हैं कि आपको एक्टर बना देंगे या you know making them do uncomfortable scenes? Has any of that ever happened? एक बार हुआ था, मैं और मेरी मम्मी हम फिल्म सिटी में किसी कास्टिंग वाले के पास ऑडिशन के लिए गए थे, Okay. और एंड आई obviously I don't want to name the show, I Yeah. know it was a very popular show उस टाइम पे, initially like when I started तो Okay. 2-3 साल में ये इंसिडेंट हुआ था, and we went and ऑडिशन लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ तो इनडायरेक्टली घुमा के Okay. बातें करना In front शुरू of your किया। mom? या Oh my God. कि पैसों का भी एंड हाँ, आई मीन कास्टिंग काउच नहीं, बट हाँ पैसों का, और फिर किसी को बताना नहीं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज वेरी क्रीपी, Oh shit. यू नो। शायद उस टाइम पे अगर किसी ने बोला होता कि हम 10% एजेंसी फी लेंगे तो हाँ। शायद हम दे भी दे भी देते, देते. Yeah, yeah. but the way he approached and the way he started talking and you know fooling around, it was very creepy and pure. He seemed also very creepy. शायद मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी इसीलिए उसने थोड़ी सी तमीज़ में बात की, हाँ. अगर मैं अकेले गई होती तो वो कुछ और भी कर सकता था, आई डोंट नो, बट आई रिमेंबर वेरी नाइसली कि जैसे ही हम उस ऑफिस से बाहर निकले थे ना, आई वॉज वेरी लाइक जिटरी, आई वॉज शिवरिंग ऑलमोस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात कर रहा था। ऑल्सो द इंडस्ट्री वॉज न्यू, आई वॉज लर्निंग अ लॉट अबाउट द इंडस्ट्री, तो बट हाँ हुए ऐसे इंस्टेंसेस। But you know, as somebody who had no relations with the film industry, parents, कोई भी फैमिली में ऐसे इन्वॉल्व नहीं था, मैंने बहुत सारे एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को आज बोलते हुए सुना है, बिकॉज टुडे दे कैन स्पीक that we felt like we couldn't fit in, and even today we feel at these parties or at these launches we just don't fit in. And I don't know you personally so well, but I have a feeling that you are a very sweet in my space person. Yeah, when you're very not much. around your people, right? Very much. How did you manage all of that, because connections and contacts are as important? For the longest time मैं नहीं सोशलाइज करती थी, मैं शायद आज भी नहीं करती हूँ, जितना मुझे लोग कहते हैं और मेरी टीम कहती है कि यू शुड, मैं नहीं करती हूँ, एंड आई एम ओके ऑनेस्टली डूइंग दैट। मेरे कंफर्ट स्पेस में मैं जितना कर पाऊँगी मैं उतना कर लूँगी, बट इफ़ यू आस्क मी टू बी समबडी एल्स एंड जस्ट गो आउट देयर एंड पुट माई सेल्फ आउट देयर, आई कुडंट डू दैट, एंड आई डोंट थिंक आई एवर डू दैट। आई एम वेरी मच like you said that in my own space with my people, काम ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है मेरे लिए ज़रूरी है मेरी सैनिटी, मेरी आई डोंट नो मेंटल हेल्थ नहीं बोलूँगी, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ें करना चाहूँगी जिसमें मैं खुश रहूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े एंड जस्ट कुछ और ट्राई ना करना पड़े। सो yeah, I mean, I still don't do that, but हाँ थोड़ा सा एफर्ट ले लेती हूँ। I think जितना मेरे कैपेसिटी में होता है उतना मैं कर लेती हूँ। I can completely relate. हमें भी बोला जाता है you have to be, you know, in touch with the actor's team, socialize. But I'm like, it's a professional relationship. Yeah. तो हाँ, अगर किसी के साथ genuinely bond हो हो गया, then great. Yeah. Then it's But nice. But but I will not be in their face and Yeah. just to socialize. That's a little awkward. yeah, it Even- has to come from within. It has that to is come true. out organically, genuinely. If you'll ask me कि आप suddenly जाओ आप party में and you have to make friends and all of that, I'm sorry, I don't Yeah. fit in. Yeah. I'll say that. नहीं हो पाएगा. I can't be somebody else and just go out there. तो वो मेरा space है. But you know, an actor's journey is filled with heartbreaks in terms of replacements or rejections or not getting what you always wanted. I think it takes a big deal of maturity to understand that it's nothing to do with you or your talent, Absolutely. but maybe something else happened.
Yeah. It could be anything, and sometimes it's unfair also, where I've heard stories, I've witnessed it firsthand, where a friend of mine who's an outsider, who's trying to make it big, not getting something because somebody with a surname got it, and that is the most heartbreaking thing True. to see. Even as a friend, I don't Yeah. know what he felt, but when you see something that's unfair that's happening, and because of that you don't get some point of work, how does that make you feel? Obviously बुरा लगता है because you know deep down you know that you are capable of doing Yeah. what the other person is doing and getting, and just for those reasons if somebody is getting work, I mean ठीक है वो मैं वो deny नहीं करूँगी, ठीक है nepotism and all of that वो हर industry में चलता है. It's just that like our industry is out there, Yeah. people just talk a lot more about it. But as an actor, as an artist, I do feel bad, and I feel कि जितनी opportunities बाकी लोगों को आसानी से मिल जाती है, हाँ. उतनी शायद हमें नहीं मिल पाती है. But again, what can you do? Yeah. आप क्या कर सकते हो? I don't know. मतलब अगर मुझे कोई बताए कि हाँ you can do this, 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 then I'll do that. Yeah. I mean, professional, if you'll ask me कि हाँ ठीक है, you just go out there, meet at least, not like party में जाके, but हाँ Correct. personally, if somebody is open to at least calling you, meeting you, taking an audition, I'll do that. उसके beyond मैं क्या कर सकती हूँ? Then I can just manifest and pray and भगवान जी एक picture दिला दो. Yeah. बाकी यार मतलब that's how it is. But again, I'm somebody जो बहुत ज़्यादा दिल पे लेके नहीं बैठती. बुरा लगेगा. Correct. And there has been a few instances like that. And कई बार एक there was this project जो मैं कर रही थी and really huge, all of that. I was very happy. Now that somebody replaced me, the project got shelved. ठीक है, मतलब वो बुरा नहीं लगा, but हाँ project ही पूरा shelved हो गया. I'm not even kidding. ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है breakup हो गया मेरा, उतना बुरा लगा था मुझे. For the longest time, I was so heartbroken. I was like, shit, yaar, I had so many expectations, this, that. But again, there comes this point, जो मुझे लगता है कि expectations आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है. Yeah. That is true. And from that time onwards, I think मैंने expectations रखना कम कर दिया. With anything, with anybody, person also. Wow. No, but you know, it, as I mentioned, it does take a huge deal of experiences. Yeah. And I think you have to be conscious enough, you have to be mature enough to, you know, take these things maturely and not personally. Correct. Yeah. Correct. Yeah. That is so true. But you know, I have to congratulate you. And why I say this, because in 7 years of my journalism career, I have always seen journalists only put actors into boxes. Our articles will be TV actor, South actor, Malayalam actor, and we अभी 2-3 साल से things are getting better COVID के बाद से. Started also talking about it. Because these are conversations, and now even journalists are like, we have to be woke or else we will also get cancelled, which I feel we should feel. Yeah. Because you know, you have a great huge deal of power. We should not misuse it actually. But you know, when these things are done and then we have an actor who successfully transitions, it must have taken a lot, I'm sure, a lot of struggle. But struggle mein journey bolungi, you know, your own journey. It's my own journey. Yeah. Because struggle is slightly a negative word. I don't want to use it. But of course, you must have had your own shares of ups and downs to be here today. Were there a lot of noises when you were making or trying to make this transition that were not backing you up or supporting you, or saying, maybe the people who are actually your friends, that you know शायद नहीं हो पाए, क्योंकि पहले नहीं हो पाए, बहुत आज भी नहीं हो पाता है बहुत लोगों से, क्योंकि आपको हमेशा बोला जाता है. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं वहाँ तक अभी पहुँची नहीं हूँ. It's just the beginning. I'm also trying. I'm also, you know, मैं वो efforts डाल रही हूँ and मैं कहीं पहुँच पाई हूँ because I took that effort. पहले एक step लिया, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ. So हाँ, वो एक journey है. तो you know, were there people or noises around you that maybe asked you to slow down and not try this? Yeah, बहुत.
इंटरनल बैटल्स ऑल्सो, मुझे कई बार ऐसा लगता था, मैं अपनी खुद के डिलेमा में रहती थी कि यार मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब यू नो obviously there used to be days Yeah. जब I used to be very confident. I used to be like, okay, I'll be patient enough, I'll try whatever it takes. क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, at least I'll not have that regret of not trying. True. And that's what's very important to me. कोशिश मैं करूँगी, नहीं हुआ it's okay. So और कभी खराब दिन है कोई, तो आपको लगेगा यार बहुत गलत कर रही हूँ, काम ही नहीं मिल रहा है, या मुझे जो चाहिए वैसा काम नहीं मिल रहा है, या मुझे ऑडिशन के लिए ज़्यादा लोग नहीं बुला रहे. बट आई जस्ट केप्ट एट इट ऑनेस्टली. देयर यूज्ड टू बी पीपल, अब ऑब्वियसली मैंने इतना काम किया है तो इतने लोग प्रोफेशनली भी जानते हैं, तो अगर किसी को मैं बोलूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए मना करूँ, सो दे वुड टेल मी, दे वुड एडवाइज मी दैट गलत कर रही है या कुछ नहीं होगा, यू सी दिस, मतलब वो मुझे और 5 लोगों के एग्जाम्पल्स दे देते हैं. लाइक हर किसी की अपनी जर्नी होती है, एटलीस्ट कोशिश तो करने दो. तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि यार ठीक है, दूर रहो. बहुत नॉइजेस ऑब्वियसली इन माय फैमिली आल्सो. आई मीन माय मॉम वुड आस्क मी कि यार क्यों इतना बड़ा ब्रेक ले रही है, क्यों नहीं कर रही है ये. अगर कोई शो आता था और मैं बोलती थी कि हाँ शो के लिए मुझे अप्रोच हुआ था, तो कहती क्यों नहीं किया, कितना अच्छा शो. बट इवेंचुअली एज एन एक्टर आई ऑल्सो वॉन्टेड टू यू नो ट्राई डिफरेंट थिंग्स, गिव एज मैनी ऑडिशंस. I'll give you a very simple example. मतलब मेरे लिए उस टाइम पे उस ट्रांजिशन में, या जो मेरा ऑडिशन फेज था अभी भी चल रहा है, उसमें एक छोटी छोटी खुशियाँ कैसी होती थी. There used to be that one production house जहाँ से मैं चाहती थी कि मुझे ऑडिशन के लिए बुलाए. कभी बुलाया नहीं था उन्होंने. ऑलमोस्ट 1-1.25 साल बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट प्रोडक्शन हाउस एंड आई वाज सो हैप्पी. मैं सिलेक्ट नहीं हुई उसमें, बट आई वाज जस्ट हैप्पी विद द फैक्ट दैट they called me. They considered me. So मुझे लगता है कि वो ग्रोथ है. हाँ बिल्कुल, वो जर्नी है, और वो बहुत, मतलब उसमें मैंने खुशियाँ ढूंढी थी. और आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप टेलीविजन करते हो ना, तो ऑडिशंस वाली जो प्रैक्टिस होती है ना, वो बड़ी कम हो जाती है. बिकॉज यू कीप ऑन डूइंग वन शो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो यू डोंट एंड अप गिविंग ऑडिशंस. बट इस फेज़ में जब मैंने इतने ऑडिशंस दिए ना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बट मुझे बहुत मज़ा आता था. मुझे बहुत खुशी होती थी जब मुझे बुलाया जाता था. ऑब्वियसली आप 10 में से 10 ऑडिशंस तो क्रैक नहीं कर पाओगे, बट वो जो एक हंगर होती है ना, काम के लिए जो भूख रहती है ना, वो और बढ़ती थी. आई कुड सी दैट माई पैशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, इफ दैट मेक्स सेंस. I used to feel happy while going to the office, while getting ready for the auditions, while writing down my script. I learned so many different things. कोशिश की कि मैंने जो सीखा है उससे मैं भूल जाऊँ, नई चीज़ें कोशिश करूँ सीखने की. So it's been a great journey. Very, very wholesome. I'm sure, but you know, where did you get that courage from to leave stability? Because in our industry, that's the most important thing to a lot of actors. Yes. Even today, when you don't work, that's your decision. Absolutely. If you're getting work and you're not working, Absolutely. is your decision. But you're also losing out on money. You're also losing out on visibility. Yes. And you are also having this pressure, like you said, आपकी मॉम ने एक शो देख के बोला तूने क्यों नहीं किया, you know, it's such a good ऐसे show. कुछ negatively नहीं, but ऐसे बोल But दिया कि normally क्यों नहीं passing किया. statement. Correct. You know, that because our family members only And want that would hit the you. good. Yeah. True. Maybe she wouldn't understand, but मुझे लग She just जाती said थी वो it. बात, और मैं सोचती रहती थी यार सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है. So yeah. But where did this courage come? Did it come suddenly? कि अब बस हो गया, अभी मुझे कुछ नया करना है, या ये शुरू से ही था मन में? नहीं, आई थिंक इश्क में मर जावा के बाद. Okay. Because that was I mean that has been a very special show to me. Of course. It worked really well online offline जो भी. उसके बाद मुझे ऐसा था कि यार अभी थोड़ा सा ब्रेक लूँगी. I'll give auditions, I'll try, I'll just meet casting directors या जो भी मिलना चाहे, and just you know अपने इंट्रोज ये वो दूंगी, थोड़ी सी कोशिश करूँगी, and then I'll see. उसके बाद ना I got, बोल दूँ क्या? हाँ बोल दो ना.
Amazon Prime Video का एक शो था Okay. which I was supposed to do. Again, जिसकी मैंने बात की. Wow. We would love to see. Yeah. And फिर वो हुआ नहीं. I was heartbroken. पर क्या कर सकती थी? मैं ऐसे Yeah. दुखी होके तो नहीं बैठ हाँ. सकती थी. And I was like, okay, it's okay. अगर मुझे सिलेक्ट किया था तो कुछ तो होगा ना मेरे में. True. I will try again. जितना भी टाइम लगे मैं फिर कोशिश करूँगी. And I don't want to brag, but I think my willpower is really strong. Yeah. अगर मैं कुछ ठान लूँगी तो मैं करके रहूँगी. फिर वही बात है कि आपको कितनी भी कोशिश लगे, कितना भी टाइम लगे, आप करके रहोगे. Yeah. तो बस I don't think that there weren't as many people to push me as such. कि यार हो जाएगा, कोई बात नहीं. Of course, I have few friends जो हमेशा they try to uplift you, Yeah. they try to motivate you. They'll be like यार ये साल अपना होगा. Yeah. And you feel good. Yeah. You feel यार ठीक है. I have really good friends who dare to motivate me and just cheer for me. But apart from that, 8 out of 10 times I would say it's me. मैंने Wow. खुद ने अपने आप को वो करेज दिखाई है. Yeah. ये सुनने में बड़ा वैसा लग सकता है कि हाँ ये अपने बारे में ऐसे No, से बात कर रही है. you but must talk about but it. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किया है अपने लिए. Yeah. I have done that on days where it was extremely difficult for me. And कई बार आपको self doubts आते हैं यार. आपको लगता है that I'm not worthy, पता नहीं सही रास्ते पे हूँ, सही काम नहीं आता है मुझे या गलत कर रही हूँ. All of that you do feel. It gets very difficult as an actor. तब आप मतलब आप अपने आप को पुश कर सकते हैं. Yeah. You have to be your biggest cheerleader. Absolutely. Yeah. And I think that you've been, and that is what has gotten you this far. And I know sometimes we undermine ourselves and we feel कि अभी तो बहुत आगे जाना है, but we should always take a moment and just clap. reflect Yeah. and clap for yourself कि आपने जितना अचीव यहाँ किया तक, है, yeah. आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है. That is true. Just see where you've come from. Yeah. And just see what all you've achieved. Yeah. I think it's very important to acknowledge your own hard work. Absolutely. Being a woman in cinema, and why I use the word woman because it is very important for us to have these conversations क्योंकि काफ़ी कुछ change हुआ है, but I want कि वो actually में सब change होके ना pay parity से लेके how you're Absolutely. treated, everything. अभी भी pay parity की थोड़ी examples है, like I heard Deepika was paid more than her male co-star in one Okay. of the films, which is a win for us. Absolutely. I feel gender no bar, if you have a bigger role, you have to be paid more. Absolutely. You could be a man, woman, gender no bar हो सकता है उसमें. If you're experienced, Yeah. if you're more experienced, if you've done more work, and yeah, exactly. अगर आप वो deserve करते हो तो आपको मिलना चाहिए, Yeah. regardless of the gender. That being said, there are often on set also, even in the media industry, I have seen that when you are a woman, you are giving some opinion, you're seen a little differently, where people are like, yeah, it's okay, keep quiet, nobody wants to listen. You get that feeling, nobody says it to your face, Yes. but you get that feeling ki, okay, but very often you have to be strong and you'll be like, I will still say, Yeah. it's okay, if you don't want to take my advice, it's fine, मैं तो बोलूँगी. Yeah. And we have to be that to make our Absolutely. space. Absolutely. Have you ever dealt with something like similar? On set a lot of times, but I don't know वो उस now that you're telling me कि maybe वो उस हिसाब से लिया जाता है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि शायद वो ऐसे ही था कि नहीं. Because see, I am, when it comes to scripts, when it comes to your dialogues, screenplay, everything, I'm fully prepared and I'll have questions. If things are a little ऐसे I'll have questions to ask and I expect you to answer me. That is true. The least I can expect is answer my questions. और जब वो नहीं मिलता है then I go on this debate. और फिर मैं नहीं पीछे बैठती हूँ यार. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप मेरे उन सवालों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आप हो क्यों यहाँ पर? फिर उसे बुलाओ जो मेरे सवालों का जवाब दे. Don't take these questions very lightly because as an actor I'm doing my job.
तो कई बार ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ओपिनियंस दे रही है, इसके ज़्यादा सवाल है, क्यों इतना घुसती है? भाई क्यों नहीं घुसूं? क्यों नहीं? That is your work. It's my work. Yeah. And if something is bothering me, I have a few queries, questions, I will ask. तो सुना है मैंने बहुत बार, और मैं कई बार जब शो खत्म होता है या कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं बोल भी देती हूँ, सॉरी मैंने इतने सवाल किया आपको, because I know people have problems. Yeah, they have. When you have your own opinions, when you have your stand, and when you question their logics. True. क्योंकि आपको पता है कि वो गलत है, बट उन्हें वो मानना नहीं है. हाँ. एंड ऑल्सो आई हैव सीन कि लड़कों के साथ इतना वो कम होता है, बहुत कम होता है. होता है. हाँ. आई डोंट वांट टू डिनाई दैट, बट डिग्रीज कम होती है. हाँ हाँ बिल्कुल. I have also seen this. Yeah. In an office. I'm sure in your yeah. In my industry also it happens. It happens so much. I was once told कि हमें आपसे बात नहीं करनी, किसी मेल इंसान को बुला के लाओ. क्यों? I was getting something set up. It was at a shoot and I was like, but it's my shoot. How bizarre. Yeah, these things happen even today. But you know, lastly, before I wrap this conversation, we also have to talk about how beauty standards have changed. Oh my God, don't even ask me. You know, there are so many people on the internet who portray a certain face which is maybe not natural. Yeah. You know, if given a chance, I would also maybe sometime love to get something done now. Yeah. I've never thought about it, but I want to be honest about it. Exactly. मन कर रहा है, कर लो, but then be honest about it and don't just fake it. Yeah. It's all natural. Natural. I woke up like this. Oh, when and in I this agree. industry it happens so agree. much. When you see that and you know that this person is lying, and so many young girls are at home scrolling and seeing that and be like, but mom, why am I not looking like that? She's also 20, but I'm not looking like that. It's heartbreaking. It's heartbreaking, especially for all the girls जिनको इन चीज़ों से exposure नहीं है. Small town girls who are just there and who admire, you know, celebrities. तो beauty standards तो I think it's a wave. Yeah. And makeup से लेके skin care से लेके all the treatments that people get, and I don't know, I mean just be honest about whatever you're doing. True. Or just don't comment on it. Yeah. And don't just fake it that okay this is how I'm always 100% हर दिन. ऐसा नहीं होता है, because eventually I also feel that as a public figure you have a certain responsibility towards all the people who are your fans, who admire you, who want to be like you. So don't portray these you know, unrealistic standards. क्योंकि वो फिर ना हमें अभी समझ नहीं आता, बिकॉज आई नो यंगर एज में जो चीज़ें इम्पैक्ट करती है ना, वो लॉन्गर रन में आपको रियलाइज होती है और अफेक्ट भी करती है. सो ऑल्सो सोशल मीडिया इज डूइंग ऑल द थिंग्स. आई डोंट फील it's fair on their innocence and their lives, because all these girls, they're losing out on their innocence and their वो जो एक बचपना होता है, या वो जो एक वो I don't know what to say, but मुझे लगता है कि मैं जब 15-16 की थी तब मैं ऐसी नहीं थी. And now I see these girls who want to have these curls and these different beauty treatments. I'm like, what is wrong with it? It's scary. It's scary. It is extremely scary. But you know, before we wrap this conversation, I always ask this to all my guests, that feminism has had a lot of meanings, and you could have your own meaning. I would just start with my meaning. My meaning is truly equality, and not putting men down or any gender down. I hate that. I hate that also. You know, men hating is a term on Instagram that is viral a lot of times, and I feel then how are we different as a gender if we are doing that to another gender? Exactly. What is your meaning of it, and how do you look at feminism? Like you said, it has to be equal in terms of everything. Opportunities बोल दो, आप opinions ले लो, आप political, social, everywhere it has to be equality. And again, not putting anybody down, but again, agar men is here, तो women should be over here. And a very
simple example that I can give, if I'm going out with a friend of mine, if he's paying for the first time, second time, I'll be like, Yeah. let me pay. There's something in There's you. something- Yeah. And it's like, अरे कुछ वो एक weird सा reaction हाँ, आता है हाँ. ना, it really irritates Yeah. me. I don't know, or else we can just split it up. Yeah. या मुझे प्लीज पे करने दो. You know वो एक रिएक्शन होता है कि तुम क्यों पे करोगी या तुम आई नो कुछ लोग होते हैं जो आउट ऑफ शिवलरी मतलब वो कि हाँ ठीक है यार, बट सम पीपल आर लाइक अरे यू आर अ गर्ल, यू डोंट हैव टू पे. And that's how the term gold digger also comes in, that she's a gold digger. Yes. What, you paid for one drink and pizza, where's the gold? So and मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक लेवल से शुरू होती है. ये सारी तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि आप इक्वल पेज अपॉर्चुनिटीज, बट नॉर्मली हमारे घरों में भी घरों से ही शुरू होता है. That is true. सो आई थिंक हमारे घर के हमारे आई डोंट नो मतलब इट शुड बी रॉन्ग दैट वे बट टू पुट इट लाइक दैट, बट लाइक माई फादर या वो वहाँ से शुरू होता है. बट उस जनरेशन में ये सारी चीज़ें नहीं थी, वो उनकी कंडीशनिंग है, तो वी कांट blame them. Yeah, we are the generation who are changing things. Who's trying to bring the change. तो वही है कि देर आए दुरुस्त आए, but this conversation shouldn't be right there just on the table. True. It has to be there practically in our lives. And I do feel changes happening, and but again I do feel कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं. Yeah. अभी भी there's still this discussion and debate going on. Long way to go. I'm sure. You know, but Heli, as I end this conversation, I have to say that you truly are meant for bigger things. And I'm not just saying it just like that. I truly feel that when I heard this entire conversation, you talking about working towards bigger goals and admitting that this is just the beginning and there's so much I want to do. Yeah. So all the very best Thank for you so everything. much. I hope we keep meeting often to This was discuss all your projects. Such a beautiful conversation. Thank you so much. Such a nice conversation. Means a lot. Thank you. Thank you. You're most welcome. Hi, this is Heli Shah and you're watching me on FPJ Showbiz.